हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और आज मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहीते साकिब सलीम। साकिब, सबसे पहले तो यार कॉन्ग्रेचुलेशंस, रियाज पठान जो क्रैकडाउन में आपका जो कैरेक्टर है, यार क्या कमाल का कैरेक्टर है। तो कुछ बताइए उसके बारे में, कितना डिफरेंट है, और ये जो कंप्लीट रॉग एजेंट का जो लुक था उसके पीछे की कहानी बताइए। Firstly, thank you for having me on your show, Divya. It's always nice talking to you. एंड रियाज पठान को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, क्रैकडाउन को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, तो या बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहली बार इस स्पेस में कुछ ट्राई किया, एक्शन ट्राई किया, प्लेड अ रॉ एजेंट, एक उसको एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की जो लोगों को पसंद आ रहा है, जो सराहा जा रहा है, जो वेदर इज एक्शन इज और वेदर हिज brooding attitude is, the amount of love that I've been getting for it is very overwhelming. But I think I'm as good as my team, so it is a great team effort that we've put together a decent show that people have liked and watched and loved, and it means a lot here. Ultimately, you work for people, you work for people's love, ऑफ कोर्स। and when you get that, there is nothing like that. तो ये जो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग जो था उसका किस्सा कुछ बताइए, इसके साथ जो परफेक्टली जेल हो गया, सिंक हो गया। यार मैं ना एक्शन ट्रेनिंग कर रहा था भाई पिछले 5-6 महीने से. आई वांटेड टू डू एक्शन फॉर अ व्हाइल, एंड दिस शो, आई वाजंट प्लानिंग टू डू दिस शो hadn't come to me. So I think when I was about 6 months into training for action, I got a call from Apurva Lakhia, and he said, "I'm making this, buddy, and I want you to be RP." I'm like, क्या बात कर रहे हो sir? He's a field agent, this, that, action. He's like, yeah, I want you to play that. I'm like, okay, let's do this. I worked hard for about 4-5 months, exactly 5 months, to get into top physical shape. I was anyway doing my action, so that was helping me. And then we got down to rehearsing the action pieces with the action director Javed Bhai. He put me on to 2-3 fighters of his so that I can get the body language of a fighter right. So it was a lot of fun. It was difficult. I would come back to my hotel room fully bruised every day after shooting some action, but the adrenaline rush of doing it and getting it right was just so high that these bruises didn't matter at all. बट कहीं पे आपको जब भी एक रॉ एजेंट या स्पाई थ्रिलर बनता है तो पीपल एक्सपेक्ट इंडिया में कि एक बहुत फास्ट पेस होना चाहिए, फर्स्ट सीन से लेके लास्ट सीन तक वो फटाफट फटाफट होना चाहिए। बट देर आर सर्टन फिल्म जिसमें एक स्लो पॉइजन होता है, धीरे धीरे बिल्टअप होता है, देन इट Mm, एक्सप्लोड्स। एंड क्रैकडाउन इज समथिंग ऑन दैट लेवल, इट्स लाइक इंटरनेशनल correct, लेवल। आप एक देख रहे हो, स्लोली स्लोली बिल्टअप हो रहा है, वो आपके लिटरली वेन्स में घुस रहा है, एंड देन यू आर सो हुक्ड टू इट। बट correct, कहीं पे वो डर correct. लगा था आपको कि शायद इनिशियल एपिसोड्स को लेकर लोग थोड़े से जजमेंटल या एक्सपेक्टेशंस को लेकर। यार मैं तो ऐसे सोचता ही नहीं हूँ, ये तो डायरेक्टर का काम है. मेरा काम तो ऑनेस्टली, इफ आई लाइक द स्टोरी, इफ आई लाइक द स्क्रिप्ट, तो मुझे मेरा काम सिर्फ ये सिखाता है कि मैं अपने कैरेक्टर पे काम करूं, एंड ऑफ कोर्स समझूं कि डायरेक्टर तुमसे क्या चाहता है. सो हम्म। आई थिंक ये मेरी वाली तो बिल्कुल नहीं थी. शायद अपूर्वा की हो सकती है, नहीं हो सकती, अप्पू कैन ओनली आंसर दैट. बट बट स्लो पॉइजन में मजा है सर, स्लो बर्न ऑफ में मजा कोर्स। है. टू गेट टू अ पॉइंट व्हेन इट एक्सप्लोड्स एंड इट जस्ट गोस क्रेजी या आफ्टर दैट इज व्हाट इज फन. तो ये जो वेब प्लेटफॉर्म यू गेव, जो इस सीरीज के या सेक्शन में जो कहिए, ये जो एक्शन ओरिएंटेड जो बन रहा है या चीजों में, रंगबाज को आपने एक बड़ी सुपर हिट मतलब वेब शो आपने दिया था। इसके पहले वेब सीरीज जनरली या तो फिर सेक्स या फिर वो एक टोटली बहुत ही डार्क साइड पे या वैसे टाइप की बनती थी। बट रंगबाज वाज अ क्लीन हिट, और जिसे बहुत लोगों ने पसंद भी किया था। वी मेट एट द सक्सेस पार्टी ऑल्सो उसके। तो उसके बाद ये जो आपके जो यहाँ पे आपके फैंस बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अगर वैसे ऑपरेट करूंगा तो कभी काम ही नहीं कर सकता यार. डर के ऑपरेट कैसे करना है? एंजॉय करना है, लोगों के साथ कोलैबोरेट करना है, समझना है, सीखना है. एंड टू बी रियली ऑनेस्ट यार, समटाइम्स यू really do well, sometimes you don't do so well, sometimes you're fantastic, sometimes you're average. So you can't beat yourself up for that. You need to keep working hard. So I don't do my next project thinking I have to do it better than Rangbaz or वो हम्म। character से better character निकालूंगा. I try and keep the approach very organic. I keep reading the material. I keep trying. I keep speaking to my director at all times, trying to understand, see how other actors are doing it. So yeah, you just keep trying, man. You don't set out with an objective of beating your last work, because
एक टाइम क्योंकि ऐसा आएगा वो नहीं कर पाओगे शायद Of तुम, course. तो फिर वो एफर्ट ही क्यों करना, rather than just enjoy the whole process and make something that you enjoy, that's it. फिल्मों की अगर बात करेंगे तो मैंने ये अक्सर आपसे कहा है, हवा हवाई इज माय पर्सनल फेवरेट फिल्म ऑफ योर्स, जो जिसमें आपका परफॉर्मेंस देख के तो मतलब मैं फिदा हो गया था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। बट वो फिल्म जितनी और सुपर हिट होनी चाहिए थी उतनी हुई नहीं। तो आपको लगता है कि ये वेब स्पेस पे आपको वो जो स्टार वाला जो ड्यू मिलना चाहिए था वो प्रॉपरली मिला विद रंगबाज? यार मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाली, डोंट बी हम्बल सब यार, कुछ इतना जनता इतना डिसाइड ये करती नहीं। है। देखो जो फैक्ट है वो है, आप एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट रंगबाज। मुझे अभी यहाँ पे इंटरव्यू में ये नहीं बोलना है कि सीजन 2 के साथ क्या हुआ, लेकिन सीजन 1 के बारे में सबने तारीफ की है, बहुत ज्यादा तारीफ की है। सो एक्सेप्ट इट, वो आप हो गए, उसके बाद पीपल लव यू एंड दैट्स हाँ हैपेंड। यार वो चला गया ना, वो चला गया, अब कुछ अगला ढूंढना है। अभी रियाज पठान है, फिर रियाज अगला पठान ऑफ कोर्स शायद पीपल आर लाइकिंग इट। मुझे कितने लोगों ने मैसेज किया कि कैन वी, इज इट गुड से, को ये हो जाता है कि वेब शो में थोड़े से आजकल इतना कुछ आ रहा है तो पीपल आर मैसेजिंग के देखे कि नहीं देखे। आई टेल देम के आराम से सैटरडे को बैठो, संडे तक खत्म करो, दैट्स यू आर गोना हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड, दैट्स व्हाट क्रैकडाउन इज। तो दैट्स व्हाट आई, मतलब ऑफ कोर्स एक सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट तो है रंगबाज में, वो रहेगी लाइफ भर, बिकॉज इट इज वेरी स्पेशल टू मी। आई थिंक इट चेंज्ड मी a lot, that show, going through that whole process on that show with my director Bhav. I think I really found something somewhere. तो वो अच्छा लगता है कि लोगों को इतना पसंद है, बट अब मैं उस फेयर के साथ काम कर ही नहीं सकता। लाइक आई सेड, मुझे काम करते रहना है और मैं पास्ट लॉरल्स में नहीं जी सकता कि अरे वो देखा 2 साल पहले मैंने क्या काम किया था। तुम हमेशा अपने आखिरी काम से जाने जाते हो, याद रखे जाते हो, तो अपना आखिरी काम जो भी काम कर रहे हो उसको अच्छा करते रहो। तो रंगबाज क्या, फिर तो हम होमलैंड बना देंगे किसी दिन यार। ऑफ कोर्स, फिंगर्स क्रॉस। मतलब स्काई इज द लिमिट, नो, मतलब व्हाई स्टॉप योरसेल्फ, जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग, कीप ट्राइंग, keep making an effort, keep learning, and that's all what's in our hand anyway. Next year you will be completing a decade in Hindi film industry. 10 years, तो जब आप मुड़ के देखते हो, आई नो यू डोंट लिव इन पास्ट लॉरल्स, बट अगर आज मुड़ के देखते हो तो वो जो शुरुआत हुई थी एंड आज जहाँ पे आप हो, तो कैसा लगता है? I'm proud of it, yaar. I've made it all by myself. I came here when I was uh, 20. I came here when I was 20 and I didn't know anybody, anything. I didn't know even how to act. I had never done acting school or any acting workshop. I've come here and in these last 10 years, all I've gotten is love and appreciation and a bit of flack here and there, which is all right. I think Yeah. that's part and parcel of an actor's job. But I've really enjoyed myself, brother. I wouldn't have it any other way. I am just so grateful for having achieved whatever. It may be very little for some people. It may be a lot for some people. Every people have their different yardsticks to measure so-called success. But the fact that a boy from Delhi could come all the way, express himself, and do this the way he wanted to is a victory in itself. So I'm very very happy, but maybe I'm not content. I'm more hungry now. I feel like I've gotten slightly more hungrier because I have maybe started enjoying acting more what I was earlier. So I think maza aa raha hai. It's a good time to be an actor, and now interesting parts are being offered, interesting shows, genres are being offered that were not that were untapped and unexplored. So as an actor, it's put me in a really interesting space. I'm really enjoying doing what I'm doing at this point. And what a way to start that entire decade of yours with 83, with playing Mohinder Amarnath, the, yeah, fingers crossed Fingers again. crossed, man. यार मतलब पीपल जो आज की जनरेशन नहीं जानती उनको तो मतलब जो लास्ट मैच तो जीता ही थी मोहिंदर अमरनाथ ने यार, इट्स वाज लाइक द वो वाला। तो उसके लिए प्रिपरेशंस No, कैसे? it's बहुत इंटेंस थी भाई, बहुत ज्यादा इंटेंस थी. We trained for cricket for about 8-9 months, 3 hours every day. I used to bowl some 15-20 overs every day just to make sure I could get the action right, hit a lot of balls so that I can get the bat swing right. And I played a little bit of cricket before that, so that in fact posed as a problem because I played cricket in a style of my own all my life, and now I had to be somebody else. So I had to unlearn that My and God. then learn a new sort of technique to it.
So that was the tricky part. And then I was fortunate enough that I got to spend a lot of time with Mohinder Amarnath, a lot of time with him. He came and spent some time with me in Dharamshala. He came for my cricket practices in Bombay. He came, visited us in London, where I got to meet him, spend time with him, speak to him, speak to his family, understand his headspace. So there was a lot of prep that was going, but I was at a stage where I was just enjoying myself. I was getting to hang out with a legend who I had full access to, who I could ask any and everything about the smallest, most stupidest thing. And I'm a cricket fanatic. What else could I have asked for being an actor? I always dreamt of playing for the country. I always dreamt that I could play one day for the Indian team, and I couldn't. And that was just a dream that was unfulfilled. And now to somehow fulfill that dream with a film like 83, where I take the last wicket and India wins the World Cup, is just such a beautiful, Again beautiful in feeling. goosebumps, It man. just gives me happiness. Yeah. बट ये बहुत टफ रहेगा ना, शायद आपका टफेस्ट रोल होगा ये, बिकॉज आपको एक तो एक्शंस लाने हैं, आपको दिखना भी है, प्लस आपकी एक्टिंग भी, तीनों चीजों को मिक्स करके वो प्रेजेंट करना मस्ट हैव बीन वेरी टफ. पता नहीं टफेस्ट या नहीं था, ये नहीं पता, बट वन ऑफ द मोस्ट enjoyable experiences of my life. Like I think मैं बहुत खुश था ये पिक्चर करते हुए. मैं बहुत ज्यादा खुश था. I was really enjoying myself. We shot in difficult conditions. We used to have really early call times. We've played cricket for 13 hours in the scorching heat for 40 days at a stretch. It's been physically very demanding, this film. There's a lot of physical strength. We would shoot for about 14 hours, then everybody had to run a certain kilometers every day so that the weight was in check. So there was a lot of prep that went behind it. But when I look back at the journey, I only see the amount of fun I've had, the amount of friends I've made, the kind of camaraderie that is there between the boys, and the sense of doing something big together. That sense when you have with people, now you're doing something. It's history, right? It's history. It's 1983. It's the World Cup. It doesn't get bigger and better than this, and I'm getting to celebrate it with my boys, and it's just been a fantastic journey. And with the news coming of cinema halls opening at 15th October, Yes, so fingers crossed to see it on a big screen. hopefully buddy, hopefully soon, hopefully very soon. और उसके साथ साथ आपकी एक कॉमेडी स्पेस में आपने एक एंट्री ली है, फनी साइड आपका देखने मिलेगा, कॉमेडी कपल, कुछ बताइए उसके जी, बारे में. I had to play a stand-up comic this time. I enjoy stand-up comedy. I think during the lockdown, I've seen a lot of stand-up comedy. I used to always watch stand-up comedy earlier as well. So also I was thinking, here now in this lockdown, when the world is going through so much, where is my fun, breezy film that I can sit back and watch and not worry about what is happening in the world? And I thought about it for a while, and then like I should do it. And the timing of the script was such. The script came to me, I read it, I'm like, this is something I'm going to enjoy doing. And that's what happened. I've The director in me have become very thick, the actors in me have become very thick. We've just gone out there, improvised, had fun, played off each other's energy, because it's a comedy film. A lot is Hmm. dependent on timing, a lot is dependent on your delivery. So we've just gone out there and explored, and because the team is a young team, everybody wanted to collaborate on the film, and everybody wanted to bring their best game. So whether it was the actors, the director, the camera guy, everybody, the DOP, everybody just put together the right energies towards it. And I believe truly that we made a really fun film. No, this is something which is really required in today's scenario, क्योंकि जो आजकल Yeah. टीवी पे जो हो रहा है, जो मीडिया स्पेशली बॉलीवुड के साथ हो रहा है, तो उसके लिए यू फील दिस इज अ परफेक्ट ब्रेक फॉर पीपल. और क्या व्यूज है साकिब, आई नो यू क्या आर ऑलवेज पता बीइंग नहीं वोकल न्यूज पे अबाउट क्या योर चल व्यूज. रहा है, मैं तो देखता नहीं हूँ भाई. मुझे तो बट द पता ही नहीं एंटायर है क्या थिंग, चल रहा है तो. बॉलीवुड बीइंग टारगेटेड ऑन द पार्ट, और उसके पहले भी जो नेपोटिज्म का एंगल लेकर और ये ग्रुपिज्म को लेकर, अब एक लेवल तक वो ज्यादा, डोंट यू फील बहुत ज्यादा, मतलब एक नेगेटिविटी हो गई है एंटायर बॉलीवुड की तरफ. दिव्या, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग जर्नलिज्म? या लॉन्ग लॉन्ग. कितने साल? I've been reviewing since 15 16 years. इतनी बुरी है क्या इंडस्ट्री? तू ही नहीं है, मैं बता. वही तो तू इसलिए मुझसे इसे ज्यादा. आई नो इट्स नॉट.
Exactly. Like I said, this industry has given me an identity. It's open, it's given me so much love and freedom to express myself. So I don't see where that hate is coming from. Generalizing the industry is not right. Who I am today is because of this industry. So I fully support it. Yeah, I think it's a great place. It not only gives me livelihood, it gives so many more people. It gives you livelihood. You're an entertainment journalist. You're a True. reviewer. There are people behind the camera. There are people who are dress dadas. There are people who are tailors. There are people who are vanity van owners. It gives employment. There's a generator owner. The people on set, ADs. It just gives so much more employment to so many others. So if some people have had issues with some people, that doesn't mean the whole industry is bad, right? If there's some one or two people you think are not right, maybe those one or two people are wrong, not the whole industry. So to generalize, I don't know, yeah. It's just become like every day. So I've just stopped watching the news, brother. Yeah. So I really don't know what's happening latest. I'm very happy with my mug of coffee, my dog by my side, watching something on TV. I think that's better utilization of my time than wasting my energy seeing somebody shout, abuse, curse people on live television. It's just horrible. So was it also the decision to leave Twitter and come out? ये क्या और आपको Yeah, लगता है कि अगर जिस दिन ऑल द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एवरीवन लीव्स ट्विटर, तो उसके बाद ये जो पूरा अटैकिंग है, कहीं ना कहीं आप लोग एक एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो टू ऑल दोस ट्रोल्स कि भाई आओ हम पे अटैक करो, और जब भी वो रहेगा ही correct. नहीं, वो रहेगा ही नहीं जो सिस्टम, तो वेयर आर दे गोइंग टू अटैक? दिव्या, ये ना, ये जो वर्ल्ड है ना, ये डिजिटल वर्ल्ड, ये तो पहली बात नकली वर्ल्ड है ना, हम्म। ये असली तो है नहीं। असली वर्ल्ड ये है कि मैं तेरी शक्ल देखता हूँ, तुझसे बात तो कर रहा हूँ एटलीस्ट। ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है मेरे लिए। Somebody is going to sit somewhere in Asansol behind a computer screen and the daylights out of me. Why? What is the fun in it? If you really want to use me, come now. At least come. If वो not meet me physically, come on a video call and use me, bhai. No problem. So that at least I know who has a problem with me. Right now, though, I feel like पता नहीं क्या असली दुनिया है ही नहीं. We have created this, and then we want validation from these people. I don't. I don't need validation from anybody. I need validation, if at all, from my family, my parents, my friends, and that's it. Not from people who I've never met in my life. So I don't think I needed to be on that platform, because anyway, I think Twitter is irrelevant. It just creates unnecessary speculations about things या which are not even true. Nobody there's It's just become like the news, right? You don't know what to believe. So it's rather you don't know anything. If it's something so big, you'll get to know about it. All the other riffraff that keeps happening, these social media battles, people fighting, cursing one another, I don't want to see that, yeah. I don't want an environment where I'm like, अरे उसने उसको वो बोल दिया यार. How rude is, why do I want to get into a space like that? I rather be just concentrate on my work, take care of my livelihood, my house, my family, and that's, I think, most important right now. वेल सेड, या वेरी वेल सेड, एंड इवन आई अग्री टू दैट कि अगर जिस दिन बॉलीवुड ने छोड़ दिया ना ट्विटर, ये पूरा गेम चेंज हो जाएगा, बट काफी लोग नहीं छोड़ ये जो पाते। गाली देते हैं ना ट्विटर पे या कहीं भी, दिव्या, ये वो लोग हैं कि अगर आप इनके सामने चले जाओगे ना, तो आपसे सेल्फी भी मांगने आ जाएंगे। मुंह नहीं तो खुलेगा, कि वो मुंह नहीं खोल सकते करेक्ट, ये लोग, ये करेक्ट. वैसे लोग हैं। So I think it's very easy to sit behind a computer screen and या say whatever you want with a fake profile photo, with a fake username. I feel like अगर genuinely इतना hate है तो आके ही बोल दो भाई. एनीवे, आपके कुछ फैंस ने ये मैसेज किया है कि सलमान खान के साथ आपने काम किया था, बिग बॉस शुरू हो रहा है, एंड दिस टाइम तो बहुत कुछ मेहनत की है उन्होंने, बहुत अलग स्टाइल में कर रहे हैं, तो क्या आपके व्यूज है उसके लिए, और कहीं पे आप जाएंगे बिग बॉस पे प्रमोट करने कुछ अपने क्रैकडाउन को, या अगेन आपकी नेक्स्ट फिल्म को? I don't know. Yeah, that's a call. I think the producers will be able to give clarity on. But I love Salman bhai. He's amazing. He's a great human being. So I wish him all the luck. Big Boss is Desh ka favorite TV show hai, reality show hai. So I think this time they'll even amp it up more. So all the best. And I don't know when it starts, to be really honest.
but I've been told अभी आसपास ही Saturday. चालू होने वाला है. Yeah, yeah. बहुत कुछ आने वाले दिनों में ही चालू होने वाला है, 1-2 दिन 4 दिन में. Yeah. So I wish भाई all the luck and yeah, I'll watch it whenever I get the time. और इसके साथ साथ क्या हो रहा है next? There's Comedy Couple that comes out next जी. year. That comes out on the 21st of October on Z5. Crackdown just released, and then I have 83 whenever theaters open. So I have these 2 more releases left, and then hopefully by the end of the year I'll get back on set again. So I'll Wow. tell you about what that is later. Yes. So fingers crossed and all the best for that. And वापस Thank जल्दी you, buddy. मिलेंगे 83 के लिए और बड़ा सा अगेन Inshallah. ग्रैंड फुल क्रिकेट बेस्ड अच्छा सा इंटरव्यू करेंगे. Done मेरे भाई. You take care. This Yeah, you too. दाढ़ी मूंछ is looking nice. Keep it. पेस बढ़ गया है इसके लिए ये रखा था. अच्छा है.